Good morning, students. Once again, welcome back for Buyback of Security last session, and today we are going to cover financial statements of companies. Before starting today's session, let's quickly take revision. Yes, who is going to answer? Basic rules of accounts. But new students, I always welcome new students. Very good, beta. Nagaratna Bani. Yes, good. Good morning, sir. Good morning, beta. You are from? Bangalore, sir. Hmm? Bangalore. Bangalore. Yes, sir. Yes. Okay. So let's start. Basic Yes, rules sir. of accounts. Yes, sir. We have two approaches, traditional and modern approaches. Hmm. Uh, Traditional approach, we have three types: personal account, real account, and nominal account. Personal account, we have two relationship: due relationship and settlement relationship. Due relationship rules debitory debtors, creditory creditors. Um, Next, settlement relationship rules: debit becomes giver, credit becomes receiver. Real account: debit what comes in, credit what goes out. Nominal account: debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Very good. Thank you. Modern approach. Modern approach, yes, sir. Assets debit balance, liability credit balance, capital credit balance, expenses debit balance, income credit balance. Okay. Can you tell me balance sheet pro forma? Yes, sir. Pro forma. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, share application, money pending allotment, non-current liabilities, long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions, uh, current liabilities, Current liability. short-term borrowings, Hmm. trade payable, other current liabilities, short-term provisions. Next, assets, non-current assets, profit and plant and equipment, tangible Property, assets and plant and equipment. property, plant and equipment, tangible assets and intangible assets, capital work in progresses, tangible assets under Intangible development. assets under development. Intangible assets Sorry, under development. sorry, sir. Non-intangible assets under development, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets, current assets, current investments, inventories, trade receivable, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets. Have you attended previous sessions, beta? What, sir? Have you attended previous sessions Yes, sir. in recorded or in live? Live, sir. But you never answered in the class. You have good confidence. Still, you never raised your hand. I have some fears, sir. Why, fear? You are answering so well. Still, you do not have confidence. Now, little You bit, sir. you answered really well. Thank you, sir. Yes, good. And can you tell me some entries? Yes, sir. Very good. Credit sales. Credit to sales. The credit to sales debtors. Sales is our income or expense. Income, sir. Income has which balance? Credit balance. So entry will be debtors account debit to sales. Simple. Sales account. Sorry, debtors account debit to sales account. Expenses payable. Expenses payable. Wait, one. Expenses payable our asset or liability. Sir, Expense payable is our asset or liability. expenses our Expense payable. Payable is our liability, sir. liability. Liability has which balance? Liability is my credit balance, sir.
So entry will be expense account debit to expense payable. Simple. Yes, sir. Okay, so like this, you revise that 15-20 entries. Now in next Okay, class, sir. in next class, now see your confidence is good. So now you revise this 15-20 entries, then you revise your cash flow statement, and this will Okay, sir. help you out to understand basics of accounting. Okay. Okay, sir. Why I always I'm telling you to do cash flow statement, because cash flow statement is a chapter where you will understand accrual versus cash concept very well. Okay, Okay. sir. And once you have grip over the accrual concept and cash concept, no, these accounting standards and all these are very simple. This is the theory part. But first we have to understand how to pass entries in the real life. Okay, Okay, you are sir. not going to pass directly, you are not going to apply accounting standard. Though you in your syllabus, we have Hmm. maximum portion of accounting standard, but in real life, first we will, whenever we start any business and whenever we are doing accounting of any business, we start with the purchase sales entry. We start with Okay. the collection and payment entries. We start with the discount entries. We start with fixed asset purchase entries. We are starting with accrual entries. Okay, Okay, for any business, these entries are must. Okay, now you do okay, not sir. have GST accounting in your syllabus. Okay, it is at foundation level. You have GST accounting also. But if you are clear with your basics, no, GST Hmm. entries are also very simple. Okay, because it is Okay, sir. input GST and output GST. Input GST when we are buying some goods, so purchases has a debit balance. So input GST also has a debit balance. Output GST has a credit balance. So entries are very simple in real life if you are clear with your basics. Okay, you will Okay, always sir. give blessings to me. Ki, sir, you made my basics very strong, and in real life also you will find it very simple. Okay, Okay, sir. so tomorrow, what is your homework? You have to do that 15-20 entries. You have to solve Okay. that Rian limited question at least 3-4 times. So it will help you Yes, to sir. clear your basics. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yes, nice. Good confidence, huh? Thank you, sir. Yes. Rishabh, can you tell me entries of buyback? Yes, sir. चलो बेटा स्टार्ट कर दो. Equity, equity share capital account, equity share capital account debit, प्रीमियम पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, और वेरी गुड. उसका पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक, उल्टा बोला. नहीं, पेमेंट करना है ना. इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ. और उसके बाद होगा सर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कैंसिल करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल अकाउंट, और कैपिटल बाय सी आर आर क्रिएट करेंगे। तो पहले आपको बोलना था प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कैंसिल करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे. आया समझ में? आपने बोला प्रीमियम को कैंसिल, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना है हमें. प्रीमियम पेबल प्रीमियम ऑन बायबैक पेबल को कैंसिल. कैंसिल कर, हाँ, प्रीमियम ऐसा पेबल को बोल. कैंसिल करना, ठीक है, कोई टेम्परेरी बात अकाउंट है नहीं. इसलिए। अब बराबर बोल रहे हो आप. लॉजिकली थोड़ा सा जहाँ पे रेक्टिफाई करना है वहां पे मैं बता दूंगा. एंड सीआरआर क्रिएट करना है. वेरी गुड. क्या एंट्री होगी? सीआरआर का फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। क्या बात है भाई साहब, बहुत सर बढ़िया. एक क्वेश्चन हाँ सर, जी, बोले. बोलिए ना. सिलेबस में पहले मैथ मैथ में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व में काउंट किया गया सर। नहीं जैसे होता है मतलब. इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में उसका वर्किंग नोट है, उसमें फर्स्ट नंबर में सिक्योरिटी प्रीमियम को अमाउंट को फ्री रिजर्व में काउंट किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं प्री रिजर्व में काउंट किया है. वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग शेयर होल्डर फंड, नो, we will यस सर। collect consider that security premium. The free reserve means what? Which is available for dividend. But in buyback calculation, when we are calculating shareholder fund, no, in that we are also considering सिक्योरिटी प्रीमियम. गॉट द कॉन्सेप्ट? तो वहां पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर करना है इन शेयर होल्डर फंड. बट ये नहीं होता है कि वो फ्री रिजर्व हो गया. फिर तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी कंसिडर किया है, तो वो फ्री रिजर्व है क्या? नहीं नहीं सर। हाँ, तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम ये फ्री होता है. फ्री वही होता है जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है. ओके ओके, वो शेयर होल्डर फंड का ओके पार्ट है पर फ्री नहीं है. अंडरस्टूड? ओके यस. कुछ एंट्रीज बताइए. डायरेक्ट यस सर। वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड.
यू आर क्लियर विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट और नॉट? अभी तक नहीं सर, मतलब थोड़ा सा रिवीजन करना बाकी है सर। ठीक है ना, थोड़ा मुझे भी समझ में आएगा, आप थोड़ा सा बताइए, नहीं समझा तो आई विल हेल्प यू आउट। अभी आपने जैसे पूछा, मैं किधर आपको बोला क्या कुछ? नहीं सर। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहा हूँ ना आपका मैं, तो थोड़ा सा रिवीजन दीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल के हम लोग कितने इफेक्ट्स देते हैं? एक ही इफेक्ट देते हैं। कितने इफेक्ट देते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल के? वन इफेक्ट सर। याद रखना, ओनली वन इफेक्ट। ओके, वी विल ओपन ऑल डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। सेल्स को इग्नोर करते क्या कंसिडर करते डायरेक्ट मेथड में? इग्नोर करते हैं सर। कैसे चलेगा सेल्स को इग्नोर किया तो? वो डायरेक्ट सर मेथड में बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड में नहीं नहीं। कंसीडर सेल्स को करते तो हैं हम सर। लोग डेटर्स अकाउंट कंसीडर। ओपन करते हैं ना राजवीर। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी बनाते हम लोग, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं बनाते, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। ओके, यस डेटर्स सर। अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स लिख देंगे। हाँ, सीओजीएस को क्या करते हैं हम लोग? सीओजीएस को फर्स्ट ऑफ गुड्स इग्नोर करते हैं। नहीं रे बेटा, डायरेक्ट मेथड में इग्नोर करके कैसे चलेगा? सीओजीएस अकाउंट के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, सीओजीएस से परचेसेस निकालते, और परचेसेस से हम लोग पेमेंट निकालते हैं। ओके, इग्नोर करके कैसे चलेगा? एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट वापस से कीजिए। आई एम telling you from last 5 days, all of you, cash flow statement is a chapter which will improve your basics day by day, day by day, day by day. If you do one problem daily of cash flow statement, no, ये 6 नंबर का प्रॉब्लम यू आस्क टू यूर सेल्फ, आप आपको खुद को पूछे। सेल्स पहले आइटम से जाइए, सेल्स डायरेक्ट मेथड क्या करूंगा? डेटर्स के डेबिट में लूंगा। सीओजीएस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय सीओजीएस। क्यों चाहिए? परचेसेस निकालना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? यू विल गेट इट फ्रॉम द बैलेंस शीट, तो आपको मिलेगा परचेसेस एज अ बैलेंसिंग फिगर। फिर परचेसेस को किधर लोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय परचेसेस एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आपके दिमाग में फ्लो याद आना चाहिए, यू हैव टू रिकॉल दिस फ्लो। अंडरस्टूड? सर हाँ जी। सर आई हैव टू आस्क समथिंग लाइक मैंने ये आज पहला सेशन ज्वाइन किया है फाउंडेशन क्लियर करने के बाद। तो ओके, सर अभी से मैं कैसे कंटिन्यू करूं ये पूछना था मेरे को, क्योंकि अभी से 10 10 लेक्चर अराउंड बैक में है, मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे और होली था तो किया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं बेटा। बायबैक अभी आज का सेशन जो है आप मत अटेंड कीजिए। यू फर्स्ट यस चेक सर। विथ योर financial statements, you can do it afterwards, but first you complete your cash flow because you are my foundation student, so I know your basics are यस सर, तो strong। मेरे को अभी आपने And ये बेसिक बेसिक सब पता है मेरे को। ये आई नो दैट। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कीजिए, वो चैप्टर थोड़ा कर लीजिए। बायबैक इज वेरी सिंपल चैप्टर, यू कैन डू इट लाइक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने किया था ओके ना सर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो यस सीआरआर सर। कॉन्सेप्ट, तो सीआरआर कॉन्सेप्ट हाँ वही वो पे सब था। पता है मेरे को। तो हाँ, आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने लिया था या मैम ने लिया था? आप आई ही ने डोंट लिया था सर, रिमेम्बर। आप ही ने लिया था, आप ही ने। नहीं नहीं तो सर, मैम अच्छा, ने लिया था मैंने, बट मैंने आपके चैनल से किया था। मैंने आपके चैनल से किया था तो आप ही का पता है मेरे को। ओके ओके, तो सीआरआर कॉन्सेप्ट और वो वही सब कुछ है। तो अमन, बहुत सिंपल है वो भी। बायबैक इज सिमिलर टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इज नथिंग डिफरेंट। ओनली टू एंट्रीज आर देयर, एक ईसॉप का एंट्री था और वन डिबेंचर्स एंट्री इज देयर। ओन डिबेंचर कैंसिलेशन, डिबेंचर कैंसिलेशन इज लाइक डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट देके ओन डिबेंचर्स को क्रेडिट करना है। यू विल अंडरस्टैंड ओके। दैट वेरी इजीली। So you go through with cash flow statement first, and cash flow is nothing but it's your non-profit organization plus single entry combined question together. You will get the cash flow statement. That is a conversion of accrual concept into cash concept. So that is, I have taken that chapter only because there are some direct entry students over here. So these direct यस सर। entry students, their confidence थोड़ा सा नीचे था, but now they are answering very well. तो इसलिए आपको तो बहुत इजी जाएगा। एंड योर एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी हैव नॉट येट स्टार्टेड, we are going to start it after internal reconstruction, so you can join with internal reconstruction after one day. I think there are 2 days are left, तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को ज्वाइन कर लेना। और तब तक आप देख सर लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑल। सर तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले मैं बस कैश फ्लो कर लेता हूँ, उतना में हो जाएगा ना?
हाँ जी, 2 दिन में कैसे आपका तो? हो हाँ। जाएगा ना अभी नाउ। यस एंड सर। इफ योर एग्जाम इज इन जनवरी नो। यस सर, 26। हाँ तो जनवरी में एग्जाम है तो आपका तो आराम से एक और बैच हो जाएगा, डोंट वरी। तो वो आप अकाउंट्स नहीं, अभी दूसरे सब्जेक्ट भी अपने को करने हैं। तो आप पहले ये बैच में आप पूरा अकाउंट्स कंप्लीट कर लीजिए, ओके। ये सर अकाउंट्स का ही सिलेबस सबसे बड़ा है, तो मैं सोच चाहता हूँ कि वो थोड़ा पहले हो, और क्या, ताकि मैं रिवाइज भी कर सकूँ एक बार। और फाउंडेशन में बाकी भी जो फाउंडेशन में भी सर वही अकाउंट्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हो गया पास में कैसे भी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेरी हैप्पी। आई आई आस्क यू सम क्वेश्चंस इन दैट बैच आल्सो और यू ऑलवेज रेज्ड योर हैंड, यस तो सर। मुझे पता ही है। यस सर, आई वाज ऑलवेज देयर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। यस सर, मैं करता हूँ नेक्स्ट, वो रिकंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी, वही बात। ओके सर। यस, बाय। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक बायबैक का लास्ट क्वेश्चन। वी लेफ्ट विथ वन क्वेश्चन नो, कौन सा क्वेश्चन था? तो यस, हु वांट्स टू टेल मी द एंट्रीज फॉर बायबैक का? ईसॉप का एंट्री एंड वन मोर एंट्री वाज देयर। यस, प्रियंका जी, चलो बोल दीजिए फटाक से, व्हाट वाज द एंट्री? गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, बोलिए। इस सब का इक्विटी शेयर्स बायबैक किया है, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन नहीं नहीं नहीं, बायबैक वो अकाउंट एंट्री नहीं डेबिट। चाहिए, वो तो बोल दिया भाई साहब ने। आई वांट एंट्री फॉर ईसॉप। ईसॉप का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब प्लान का का सर। नहीं था क्या वो? हाँ। यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू, अरे इक्विटी एक शेयर बार कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ, एंड ओन डिबेंचर जनरल कैंसिलेशन। रिजर्व वाला, जनरल। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। वो एंट्री नहीं करना था वो प्रॉब्लम में, वी डोंट हैव टू पास दैट एंट्री। नहीं सर, उस एंड वन प्रॉब्लम में नहीं मोर। करना, इन जनरल। हाँ हाँ, इन जनरल, ओके। एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर ओन डिबेंचर इज कैंसल्ड? सर डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और लॉस हुआ तो लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, वो बैलेंस शीट किया क्या आप लोगों ने? हैव यू डन विद दैट यस बैलेंस सर, शीट? बैलेंस शीट किया। मेरा ना टू टू लाख का डिफरेंस आ रहा है। ग्रुप में तो शेयर हुई है बैलेंस शीट, पर वो आप एक बार थोड़ा बता दीजिए। ग्रुप में शेयर हुआ है क्या बैलेंस शीट? आई विल चेक इट आउट। यस सर। किसका आया था बैलेंस शीट? सर I want that answer. Yes, anyone please write it in chat section. Sir, I tallied balance sheet. सर रिजर्व एंड सरप्लस में दिक्कत हो रही है, बाकी सारे अमाउंट तो मैच हो गए हैं। एसेट साइड का पूरा मैच है और लायबिलिटी साइड पे भी सारी चीजें मैच है, बस वो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ चीजें दिक्कत हो रही है। I will take it in next session. मुझे ओके एक बार सर। देखने दो, आई फॉरगॉट दैट बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट केस स्टडीज का बैच है ना कल। वन वेबिनार इज यस सर। देयर, सो मैं उसमें बिजी हूँ थोड़ा सा। बिकॉज केस स्टडीज का पूरा ये किया हुआ है सब, बैलेंस शीट टैली। महालक्ष्मी, कैन यू शेयर दैट बैलेंस शीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। मीन्स, इज इट रीडेबल? सर एक पॉइंट था जो हमें वो प्रॉफिट हुआ था ओन डिवेंचर्स पे, हाँ हाँ। पॉइंट 2 का। सर उसे तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करके दिखाएंगे ना। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यस, पी एंड एल में। यस सर, बस वही वाले पॉइंट पे कोई माइनस करके दिखा रहा था, कोई कैसे करके, तो वहां पे दिक्कत प्रॉफिट हो रही थी। प्रॉफिट तो ऐड होगा ना, पी एंड एल एज अ क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट आल्सो एज अ यस क्रेडिट सर, बैलेंस, वो क्रेडिट हम क्रेडिट ऐड ही ऐड कर रहे करना हैं। है। ग्रुप में एक बैलेंस शीट शेयर हुई थी, उसमें माइनस करके दिखा रहे थे। क्योंकि माइनस क्यों किया बेटा? जी सर, वही हमने पूछा था। सर एक ना जी बोलो। प्रॉब्लम भी आ रहा है लाइव क्लासेस में। बोलो ना। सर क्या हुआ था कल इवनिंग में डीटी की क्लास में ना, ब्रेक पे गए थे। ब्रेक पे आने के बाद ना एलवीसी में उस पे रिमूव ऑप्शन आ रहा कि होस्टेड रिमूव्ड यू, और फिर जब दोबारा लॉगिन कर रहे तो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे।
और ऐसा मेरे साथ नहीं, ग्रुप में मैंने शेयर की ये बात, तो कईयों के साथ ऐसा हुआ है। एक प्रॉब्लम ये हुआ। अशोक जी, अशोक जी, ग्रुप में 5 लड़कियां उनके साथ, क्योंकि अब तो हम रजिस्टर करके कर रहे हैं तो डिटेल्स डालनी। पर आप अजित सर को पहले कंफर्मेशन लेके किसी को भी अभी को होस्ट मत बनाइए। तो अजित सर को कॉल करके पहले पूछा करो। और अजित सर आपको अजित सर सुन रहे हैं क्या आप भी? आर यू देयर अजित सर? अच्छा, अभी अजीत सर यदि ज्वाइन होते हैं ना अशोक जी, तो ये मत कीजिए। पहले कंफर्मेशन लेते जाओ। इवन मेरा भी ज्वाइनिंग के पहले कंफर्मेशन लेते जाओ। मतलब पहले कॉल किया करो लगे तो। ये क्या होता है ये, ठीक है अभी वी आर रिमूविंग ऑल दिस डिफिकल्टीज, एक्चुअली आई नो दैट। और प्लीज एक बार ग्रुप में भी लिख दीजिए ये चीज, सो रश्मि मैम भी देख लेंगे फिर कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सो शी विल डेफिनेटली विल टेक एक्शन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट इट इन दी आवर ग्रुप कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। सो थोड़ा सा एक्शन जल्दी लिया जाएगा फिर। ओके। ओके सर। सर एक्चुअली हाँ, जूम पे एग्जिट होने के बाद मैं ऐप पे जाके क्वेश्चन पूछ रही थी ना, तो शायद वहां पे मैम देख नहीं रही थी, तो वहां पे मेरे कल क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए मेरे को दिक्कत हो गई थी। नो प्रॉब्लम, ठीक है अभी वो लेंगे। अभी ये अजीत सर से मैं बात करता हूँ आज। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। पर ये अकाउंट्स में नहीं आता है बंदा फिर। दिखा तो नहीं मुझे कभी। शायद इतने सुबह उठता नहीं होगा। सी वी हैव टू इग्नोर सम पर्सन्स। तो ये ऐसे लोग हैं एंड दे विल डेफिनेटली ट्रबल यू। तो प्लीज इग्नोर हिम। एंड आफ्टर सर्टन टाइम ना वो खुद ही सब ये छोड़ देगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी ही इज नॉट द स्टूडेंट, ही इज एनी, अकॉर्डिंग टू मी, कि एक प्राइवेट क्लास का ही कोई बंदा है ये मुझे लग रहा है। इट्स माय ओपिनियन। ये तो ऐसे ही है, क्योंकि बीच में जो हाँ, प्रॉब्लम्स आए थे वो टीचर्स के नाम से ज्वाइन कर रहे थे। हाँ, हाँ, तो वही चीज है। तो ठीक है अभी वी हैव टू इग्नोर हिम बिकॉज ऐप इज ओपन फॉर ऑल। तो अभी थोड़े दिन के बाद डेफिनेटली इंस्टीट्यूट इसके ऊपर भी काम कर ही रही है। बट इग्नोर हिम, मैं इतना ही एडवाइस दूंगा। ओके ठीक है। सर। यस। ओके सर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक 6 नंबर इज इजी था। यस सर, इजी और था। हाँ, टीवाई के भी इजी थे। सो टीवाई के यू कैन डू बाय योर ओन। कर लिया है टीवाई के तो। टीवाई के इजी थे ना? यस सर। तो उसमें मुझे बायबैक वो डाउट चैप्टर। था, लास्ट टाइम पे मैंने पूछा था वो, बायबैक हुआ था, फिर उसके बाद बोनस शेयर्स इशू हो गए थे। अच्छा, बोनस शेयर्स आर ऑल्सो इशूड, तो विल राइट दैट एंट्री ऑल्सो। हाँ, वो बता यस देता हूँ सर। मैं आज। टीवाई के यस। 9 है सर, वो केजी लिमिटेड। ओके, ठीक है। फर्स्ट विल कंप्लीट 6 नंबर। ओके सर। ओके। अभिषा, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। रीड 6 नंबर क्वेश्चन बेटा। Perot Limited, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March 2021. Equity share capital, shares of rupees 10 each, fully paid 330. Don't read amounts. Reserves and surplus, general reserve, security premium, P&L, infrastructure development reserve, which is not free reserve out of this, not a part of shareholder fund. Sir, infrastructure development reserve. Write down over there. Not a part of shareholders fund. Yes, sir. Loan funds. Then the shareholders of Perot Limited, on the recommendation of their board of directors, have approved on 12 September 2021 a proposal to buy back the maximum permissible
number of equity shares अच्छा, considering the large surplus funds available at the disposal of the company. so can you tell me maximum permissible number is given, so we have to follow all three tests, correct? Yes. Yes. So which is the first test, beta? Shareholders test. Share outstanding test. Second test, Okay. Resource test. very good. And last test, Debt equity test. कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आज बोलते टाइम, एज यूजुअल। मतलब जो हमेशा होता है वो नहीं दिख रहा है आज कॉन्फिडेंस, व्हाई? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पहला टेस्ट गलत ही हो गया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट तो आना चाहिए था ना। हाँ। हाँ, so what is the for pro forma? Pro forma I already given. Number of shares outstanding at the beginning. कितना number of shares है outstanding? Outstanding. It's 330. 330 rupees. Yes. Don't Sir. convert. Don't convert. Only 33 Oh yes, 33. into कितना % is buyback? 25. So what is the answer for first test? 8.25. Now how to present you are already aware that pro forma का test. Okay. Yes. Resource में what you will consider? 330 you will Shareholders consider. fund. Yes. 240. 240. Then 90. Then again 90. Okay. It's 750. Calci the calci. $750, no beta? Yes, sir. Into 25%. 187.5. What is the buyback price? 25 per share 25 and per share. 20% above 20 market price. So plus buyback price 20%. is 30 rupees. Yes, 30 rupees. $6.25. Yes, 6.25. 6.25 is the correct answer. And what about debt equity ratio? 1800. There are now three options, my dear. 1800, 1200 and 1500, correct? Yes. So how much equity you have to maintain? 900, 900. 600, 750. 50. This you have to maintain, no? To be maintained. So you need to maintain 900, 600 and 750, correct? Yes, sir. But the problem is that your existing fund kitna hai? 750. 750. It is less than 900. So you cannot buy back in this case. Yes. Because you want 900 fund, but your fund is only 750. So are you going to buy back as per No. debt equity ratio test? No, because my fund is less than what is required. So required is 900, but my fund is only 750. So I cannot buy back in first case, correct? Yes, sir. What about second case? So we can. Yes, we can. But out of 150, you have to create not only buyback, you do not have to buy back only share, but you also have to create some reserve, CR. correct or not? Yes, sir. So what is my reserve? CRR 30 and 10. So I have to create it in the ratio of 30:10, correct or not? Yes, sir. 150 divided by 40 into 30. So 112.5 and 10 is equal to 37.5.
So maximum shares that you can bought back is 112.5 divided by 5. 30 rupees. Yes. So 3.75 shares. Yes. So maximum shares you can bought back is 3.75. Got the answer or not? Yes. And in last case you cannot buy back No, because because it's 750. 750 750 is total. the, yes, exactly. There will be no CRR if we Yes, in take that that case. option. Therefore, we cannot buy back any amount in third case. So which situation is possible? Second. Second situation is possible. Then yes, whichever is lower. So 3.75, 6.25, 8.25. So how many shares you can bought back? Sorry, I didn't get. How many 6.25. shares? 6.25. Ajit sir, are you Yes, sir. there, Ajit sir? Yes, sir. सुनिए ना, अभी जस्ट स्टूडेंट का ये आया, कल आपके नाम से किसी ने तो ज्वाइन किया और सबको रिमूव किया है। हम्म। तो yes, कल sir, उसका टैक्स एक के क्लास सॉल्यूशन में हमने होगा। किया है और उसका हमने हाँ सॉल्यूशन किया है, तो आज के बाद से वो होगा नहीं। हाँ, सो यस, अदर स्टूडेंट्स मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स ने दे आस्क मी दिस क्वेरी, तो सर वो इसीलिए मैंने बताया उनको। तो और मैंने अशोक सर को भी बोला है कि आपको फोन करके पहले पूछो और फिर ही एडमिट करने लगाओ। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, कल वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाए इसी वजह से। यस, तो वी हैव कंप्लीटेड 3 टेस्ट। हाँ बेटा, तो टेल मी Yes. कितना अभी से हम लोग बाय बैक कर सकते हैं? हाउ मेनी शेयर्स वी कैन बॉट बैक? 6.25. 3.75. Oh, all right. 6.2. Why 6.25, No, my no, no, dear? no, no. 3.75. I didn't see that amount down. Entry. Equity share capital account debit, Share capital account debit. 10 rupees. Premium payable on buyback, Securities, yes, premium paid on buyback account debit to equity share 20 buyback. rupees. 20 rupees, no? Yes, yes. And equity shares bought back, 3.75 into 30 rupees. Arey, my dear, someone is asking me, sir, it is always in the ratio of, क्या रेशो पूछा है मुझे? सर, इट इज ऑलवेज इन द रेशो ऑफ 30:10. नो बेटा, हाउ? Why 30:10? Because 10 is a face value and 30 is a buyback price. So we are taking in the ratio of, see, CRR always we maintain 10 rupees. So 10 rupees is a face value. Always we maintain face value. Therefore, we have taken 10 for CRR and buyback price is 30. So it is not always in the ratio of 3:1. Coincidentally, in fourth number and fifth number, you are getting the same answer because your buyback price is same and face value is also same in both question. Therefore, Deepika, you got the same ratio. It is not always in that ratio. No, beta, ये कितना silly question था. So ये buyback and face values are different, तो रेशियो भी डिफरेंट ही होएगा ना. दीपिका, करेक्ट है? हाँ, सेकंड एंट्री क्या होएगी बेटा? इक्विटी शेयर्स बॉट बैक अकाउंट Equity डेबिट टू share buyback account debit to bank account. 3.75 into 30. 30. And Yes. security premium we cancelled with premium payable on buyback, correct? Yes. 3.75 into 20. And what is the CRR we will create? Profit and loss account debit to CRR. 3.75 into how much? 30. No, CRR में 10. कौन सी वैल्यू CRR जाती is है? 10. 10. 10. आपको प्राइजेस अमाउंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है. नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू पास एंट्री. Yes. Equity share capital cancel with face value, premium payable on buyback, excess amount 20, buyback price is a 30. So 10, 20, 30. Then buyback 30 to bank. Then Yes. security premium 20 rupees. We 20. cancelled it. And 10 rupees we transferred to CRR. You got these entries? Yes, yes. And we have completed this question. So this is very simple. Yes, it is very simple. So those 3 tests we need to show in the working notes, right? Yes, working notes and this presentation. I already have given you the presentation on very first day of the buyback.
So you can check this presentation. देखिए इतना क्लियर प्रेजेंटेशन होना चाहिए. नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये रट्टा मारना है आपको. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 25% ऑफ द शेयर्स. दिस फॉर्मेट इज सिमिलर टू ऑल. तो हु इज गोइंग टू गिव मी दिस प्रोफॉर्मा? देखो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड 25% ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग. ये आपको बिना देखे बोलना है. देन रिसोर्स टेस्ट. रिसोर्स टेस्ट में आएगा पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. तो यूल गेट शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड के नीचे 25% ऑफ द शेयर होल्डर फंड. सो बायबैक प्राइस से डिवाइड किया तो यूल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक. एंड थर्ड वन, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. लोन फंड. लोन फंड के बाद इक्विटी टू बी मेंटेन, minimum equity to be maintained after buyback, that is a 2:1 present shareholder fund, and maximum permitted buyback after. yes, तो ये आपको यहां पे वापस गलत हो गया. C माइनस बी करना है. C माइनस बी. The above two tests are still okay, but the third one is a bit like how to represent it. You नहीं, need वो to. थोड़ा सा आप थोड़ा लॉजिकल जाइए. ये C मायनस बी किती सगळ्यांमध्ये चेंज करायचे ते. जिथं जिथं असा प्रोफॉर्मा आहे ना, डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, तिथं C मायनस बी 100 पेजेसच्या बुकला चेंज करायचं होतं. परवाच सांगितलेलं मी. आणि इथं बघ, या चौथ्या प्रॉब्लेम मध्ये पण चेक कर. इथं पण मी सांगितलेलं C मायनस बी करायला. ते चेक कर एकदा. 5th आणि 6th मध्ये. हा, 5th आणि 6th मध्ये दोन्ही मध्ये करायचे. सी बेटा, लोन फंड्स इज गिवन, करेक्ट है. लोन फंड्स Yes, का sir. हाफ मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन आफ्टर बायबैक, एंड प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड, देन मैक्सिमम परमिटेड बायबैक of equity shares C minus B, and maximum number of shares that can be bought back. Understood? Yes, the process I understood, but how to present it, that I need to like do it. Repo times you recall it. No, loan funds के नीचे क्या आएगा? 2:1 चाहिए. Minimum equity to be maintained after buyback. Number 3. But what is the present equity shareholder fund? I will compare with that. Then number 4, maximum permitted buyback of equity shares. And maximum permitted buyback के बाद maximum number of shares, because buyback amount will get, but we don't want amount, we want maximum number of shares that can be bought back. Okay. Okay. आराम से जाइए, सब कुछ इजी है. डोंट से नो. जब मैं भी पहली बार रीड करता हूँ ना, मेरा भी मेमोरी इज नॉट लाइक कि वेरी क्लियर मेमोरी है, तो मैं 3-4 टाइम्स रीड करता हूँ, रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ. सो यू कैनॉट डू इट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट कि भाई हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वी आर नॉट मेरिट रैंकर्स, मतलब मैं खुद को नहीं मानता हूँ. सो वी हैव टू डू सम हार्ड वर्क. तो आपको 3-4 बार रीड करना है. दैट इज अ सिंपल टेक्निक, एंड डू इट लॉजिकली. मुझे क्या चाहिए? लोन फंड. लोन टर्म का हाफ वाई, बिकॉज मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन. देन प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड. देन ये दोनों का डिफरेंस, इतना मैं बायबैक कर सकता हूँ. सो मैक्सिमम permitted buyback of equity shares, but that maximum permitted buyback is in rupees, so I have to get answer in numbers. So maximum number of shares that can be bought back. Simple. Okay, sir. Is it difficult? No, sir. Not at all. मनीषा, फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है भाई? तो फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर क्या क्यों चाहिए अपने को? प्रेजेंट ही चाहिए ना मनीषा. व्हाई यू आर वरीड अबाउट फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड? सो आफ्टर बायबैक यूर फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर इज गोइंग टू बिकम दैट मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन. 600 हो जाएगा फ्यूचर इक्विटी शेयर. 600 हो जाएगा ना आफ्टर बायबैक एंड CRR. 150 रुपए का बाइफर्केशन, तो 150 का घट जाएगा, 150 डाउन होगा. तो फ्यूचर शेयर होल्डर फंड विल बी 600 ओनली आफ्टर बायबैक. बायबैक के बाद आपका शेयर होल्डर फंड इज गोइंग टू रिड्यूस. So how buyback affects share prices? Very simple. In market, if your shares are getting down, okay, after buyback, so supply is less, and if supply is less, then price will up. Okay,
तो प्राइस अपने आप अप हो जाएगा। तो चिरंदीप, बायबैक के बाद प्राइस इज अप एंड बोनस शेयर्स के बाद प्राइस विल गो डाउन, बिकॉज आफ्टर बोनस शेयर्स इन मार्केट यू हैव मोर नंबर ऑफ शेयर्स in bonus shares, but after buyback क्या होगा, buyback के बाद shares will get down, number of shares will down, and therefore beta prices will go up after buyback. So this is how your share market gets affected due to buyback. Demand and supply rule, very simple. Any other difficulty, my dear? No, sir. Okay, चलो, so ये भी हो गया. In which question you have doubt, beta? Priya Mishra ji, can you raise your hand? Yes. Now, what is the doubt? Otherwise, we will move to last part. That is the minimum dividend declaration rules. I forgot to take that in financial statements. So, वो हमें आज complete करना है. Yes, sir. Good morning. हाँ, बोलिए Sir, बेटा प्रिया. it's a question of previous year questions. Like it's a question from previous year questions. उसके अंदर sir tests करने थे and उसके अंदर company ने preference share redeem कर रखे हैं at a premium of 10%. So what they've done is, ये मेरे को सर समझ नहीं आया कि उन्होंने जब टेस्ट करे थे तो पेड अप कैपिटल तो उन्होंने ले लिया इक्विटी शेयर कैपिटल, जो उन्होंने फ्री रिजर्व था उसके अंदर से उन्होंने रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट और उसका प्रीमियम माइनस कर रखा है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन स्टडी मैट में नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. प्लस एक और डाउट था कि उस क्वेश्चन के अंदर Don't refer previous question paper for redemption of preference shares because we have made changes in last 2 years. Okay. For redemption of preference shares, we were using first security premium, but after that we consult with the expert committee and they have given us the solution that security premium you cannot utilize it for. See, we have an expert committee over there. Okay, so whenever we are having doubts, no, we take the reference of the expert committee. So BOS भी क्या करता है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना. So security premium we cannot use for the buyback, ये याद रखना, for redemption of preference shares. Okay, तो आप थोड़ा सा वो क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए. सर प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं अगर सपोज, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, वो तो उन्होंने माइनस कर ही रखा है. इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिस क्वेश्चन में टेस्ट करने हो और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रखे हो, तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे? और प्लस उन्होंने कैपिटल रिजर्व्स भी उन्होंने फ्री रिजर्व्स में नहीं ऐड कर रखा, उन्होंने एक क्वेश्चन में कर रखा है और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने कैपिटल रिजर्व्स भी फ्री रिजर्व्स में ऐड नहीं. बहुत पहले के पेपर सॉल्व मत कीजिए. नहीं सर, इट इज 2021 के भी मत कीजिए. It's my advice to you for buyback chapter. Please, now you only prefer study material questions. Okay, because in buyback and redemption, if both problems are there, तो redemption में पहले problem था, but I am telling you we have changed study mat according to new rules, but हम कर रहे हैं मतलब change, and even that's question number 6 I will remove it. तो आप थोड़ा सा जो कल परसों मैंने बताया था, we have made changes in that, no, तो आपको वो मैं करके देता हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप पुराने क्वेश्चंस को रेफर ना करिए फॉर दिस चैप्टर. इट्स माय एडवाइस टू यू बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज. कंफ्यूजन क्रिएट हो गई सर अगर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आए, मतलब ऐसा कुछ आएगा नहीं. आपको मैंने बताया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यू कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम. योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. आप और कंफ्यूजन मत कीजिए, आप बार बार वो टेंशन में आ जाते हो ये बात बोल के. तो आप थोड़ा, मैं जो चैप्टर में बोलूंगा, यू कैन टेक हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम ओल्ड पेपर्स, बट डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चंस बायबैक के. ओके ओके सर, ठीक है. और मॉड्यूल के सब क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर, तो वो मत कीजिए, ठीक है. अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा. ओके सर, ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस? सर कैपिटल रिजर्व उन्होंने क्यों नहीं इंक्लूड किया? Because it's not a free reserve. Capital reserve is free only if you see there are two types of reserve.
Free reserve and specific reserve, I already told you. But capital reserve is actually why it is created. Sometimes you may get some cash by selling any movable property or immovable property. You can add that because that is not day-to-day profit. So you can record it in the cash capital reserve. Okay. And sometimes capital reserve is only for revaluation purpose we are using that. So if you are getting it in cash, it is free reserve. And if you are not getting in the cash, then it is again specific reserve. Okay. For example, suppose I sold one movable property, immovable property, 100 rupees ki property, I sold it for 120. So what is the profit I am getting? 20 रुपीज 20. नॉर्मली ये 20 रुपीज मैं किधर ट्रांसफर करता हूँ P&L में नॉर्मली ओके बट कुछ अकाउंटेंट्स इसको कैपिटल रिजर्व में भी डाल देते हैं कहां पे डाल देते हैं Capital reserve. capital reserve. Now this capital reserve is a cash component, no, because we are selling property and we are getting profit. करेक्ट है तो ये कैपिटल रिजर्व किस में आया इन कैश Cash. करेक्ट सपोज इफ आई रिवैल्यूड द प्रॉपर्टी नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी सो इधर मैंने एंट्री क्या किया कैश अकाउंट डेबिट 120 टू प्रॉपर्टी 100 and to Profit. capital reserve 20 got this entry Yes, sir. Okay. so this capital reserve में कैश है ना कैश मिला है अपने को okay now suppose if I am doing revaluation if I am doing revaluation तो मैं क्या करूंगा 100 का एसेट 120 पे I will show तो मैं एंट्री क्या करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 टू कैपिटल रिजर्व 20 एक्चुअली रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है बट सम अकाउंटेंट मे कंसिडर इट एज अ कैपिटल रिजर्व ओके तो नाउ टेल मी वेदर दिस कैपिटल रिजर्व इज इन कैश और नॉट इन कैश Yes, sir. It's in cash. ये वाला Sorry. It's not in cash. It's a part of. It should be a part of revaluation reserve. But okay they've put it should be a part of revaluation reserve but you have shown it in the capital reserve capital so reserve. Yes. out of this capital reserve you cannot declare dividend Oh. understood so it is not considered as a part of shareholder fund in that case but this reserve will be considered as a part of shareholders fund Okay, sir. so in capital reserve also first you have to check whether it is received in cash or whether it is not received in cash if received in cash then it's a free you are getting my point Yes, sir. and if it is not free then better you cannot utilize it for buyback Okay, sir. understood Yes, sir. okay so there are two concepts capital reserve consist of free cash and not in cash okay Yes, sir. any other question that you have No, sir. no so who is going to give me a pro forma all three tests without looking into pro forma okay yes अभिषेक would you like to answer और हो गया आपका अभी टर्न बस हो गया आपको बहुत पूछा आज मैंने yes ये चिरंदीप would you like to answer all three tests yes sir हाँ जी बोलिए sir share outstanding test number of share outstanding 25% of outstanding shares resource test paid up capital Correct. free reserves including securities premium shareholders fund 25% of shareholders fund फिर उसको हम डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से हमको नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम that नंबर can ऑफ be bought back यस फिर डेट टू इक्विटी लोन फंड जितना रहेगा मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड लोन फंड डिवाइडेड बाय 2 फिर मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट जो बायबैक के लिए कर सकते हैं बी अब ये हिंदी में लिखोगे वहां पे नहीं सी शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे और डी फिर उसको माइनस करेंगे सर आप प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड बोलो ना उससे अच्छा ये प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड हाँ देन फिर डी में उसको माइनस करेंगे प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड से मिनिमम इक्विटी और मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक
after considering CRR. After considering CRR, yes. And then you will get maximum number of shares that can be bought back. That can be bought back. Okay. So CRR आपको consider करते हुए maximum permissible buyback you have to calculate, and then you will get maximum number of shares that can be bought back. Last का थोड़ा सा नहीं आया, बाकी बराबर था. अंकुश, yes बेटा, बोलिए एक बार. चलो, all of you have to do this in the class itself. हाँ जी, चलो. यस, फर्स्ट टाइम आउट है जी. कहाँ से हो आप? आउट है मतलब महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र जी जी. हाँ जी, बोलिए. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग. उसके बाद रिसोर्स टेस्ट. रिसोर्स टेस्ट में आएगा शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल, प्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L. उसका 25% डिवाइडेड बाय बायबैक शेयर प्राइस. नेक्स्ट. उसके बाद डेट इक्विटी रेशो टेस्ट. डेट इक्विटी में मिनिमम जो इक्विटी मेंटेन करना होगा. डेट फंड फर्स्ट, लोन फंड्स. या लोन फंड का 2:1 जो इक्विटी रेशो टेस्ट है. मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन. यस. उसके बाद शेयर होल्डर फंड में से उसको माइनस कर देंगे. प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड. हाँ, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड से उसमें उसके बाद वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट निकलेगा, उसको डिवाइडेड बाय बायबैक शेयर प्राइस. तो we'll get maximum number of shares that can be bought back. I want that particulars column. Avti ji, your concepts are clear, but I want that particulars column. ठीक है? ओके. ठीक है, अच्छा बताया, but do that. Yes, Pawnee. Good morning, sir. Good morning. चलो. This is the shares outstanding status. In that number of 25% of number of shares, and then second one is resource test. In that resource test, first one is paid up capital, that is equity plus preference shares, and then free reserves plus security premium, and then shareholders fund A plus B, and then 25% of shareholders fund, and then buyback per share, and then number of shares that can be bought back. Very and then good. Third test is debt equity ratio test. First one is loan fund, and then minimum equity ratio fund, that is in the ratio 2:1, and then present equity shareholders fund, and then maximum permitted buyback of equity shares, and then maximum number of shares bought back D/E. Very good. You are from? Bangalore, sir, Karnataka. You are answering for the first time or what? Yes, sir, first time. Very good, beta. Good confidence. Thank you, sir. Yes. Chalo. So, yes, we have done this buyback. Now, let's move to next chapter now, dividend rules. So, anyone has doubt in this buyback now? गुड मॉर्निंग सर. सर मेरे को टेस्ट में डाउट था. फर्स्ट वाले जो टेस्ट था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसमें हम लोग 25% ऑफ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स लेते हैं, और जो रिसोर्स टेस्ट था उसमें जो जनरल रिजर्व में शेयर होल्डर फंड्स में जो शेयर कैपिटल लेते हैं वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं ना? Yes, yes, yes. ओके सर. Very good. Now, no one has doubt? Full clear. प्रियंका बोल रही है. सर, इन क्वेश्चन कुछ तो बायबैक तो क्लियर है. आस्था, प्लीज सी द केस सिनारियो 3 of model test paper 5. Given in the question in lakhs, but might be, yes, we will check it out. Astha, we will change it. Sir, in question only debt ratio test asked, then we have to show all 3 tests. No, beta. Deepika, if only debt test is asked, then no need of all 3 tests. Okay?
I don't know why, but there is a poor performance now. Other students who are not joining Zoom classes, but I think many students are there on YouTube. Why you are attending on YouTube? कितने लोग हैं? बहुत से लोग YouTube पे ही देखते हैं. Why I don't know. चलिए, so let's start with this final part of financial statement. I forgot to take that. कल 2 दिन पहले मुझे याद आया, अरे I forgot to take that test. See, declaration of dividend. Before break, I am going to take the concept first. Before, yes, declaration of dividend. Okay. Astha beta, read it. Good morning, sir. Yes. Distribution of divisible profits of a company among the members based on number of shares held. Features: it can be declared out of free What is the reserves. concept? Beta, what is the concept? Distribution of divisible profit of a company. Means, divisible means what? Distributable. What is dividend? Dividend is that part which you can distribute out of your profits which you earned. So it's a free reserve. Divisible profit means free reserves. Okay. Now, why we are paying dividend, beta? Why we are paying dividend? See, shareholder has invested, na, Astha, shareholder has invested some amount in your company, correct? If he has invested, he wants something in return. Okay. आपने मुझे 1 lakh rupees दिया. If you have given me 1 lakh rupee, and if I return you only 1 lakh rupee after 5 years, are you happy then in that case? No, sir. No. You will tell me, sir, why, sir? I have invested 1 lakh. I have trust on you. And you only have given me 1 lakh rupee in return. And you earned out of this a good profit. So, every equity shareholder, see, debenture holder and preference holder, they will get the fixed rate of interest and fixed rate of dividend. So they are not concerned about dividend. Okay, they are not concerned about returns because they know we are going to get fixed return. And debenture holders know even in losses we will get return. Preference shareholders will tell, yes, if there is a profit, then only we will get a return. If not in this year, we will get in second year, if that is a cumulative preference shares. Okay, so dividend, they will get it. So suppose in this year, if I am in loss, and in second year, I am in huge profit, so preference shareholder will get 2 years ka dividend. Got the concept? Yes, sir. But what about equity shareholder? Equity shareholder is not getting any fixed rate of dividend. Whatever percentage you will declare it in the meeting, we have to pay that dividend. Okay. Now, beta, there are 2 types of businessmen. One whose vision is long lasting and one whose vision is short term. Short term businessman, he will make sure to give dividend to every shareholder. Okay, because he is not interested in the expansion of the business. So he will distribute whatever the profit is there, he will distribute. Distribution means dividend. Distribution means dividend. And what is the profit if not distributed? If not distributed, it is called as retained earnings. What do we call it as? Retained earnings. Yes. So जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखो आपने एफएम में भी पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू होगा क्या आपका? सर नहीं, मैं अभी ग्रुप 1 ही दे रही हूँ. अच्छा, तो एफएम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि देयर आर केई 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. One is dividend approach, one is earning approach, one is CAPM approach, one is dividend realized yield approach.
तो डिविडेंड अप्रोच इज दैट some companies may think कि dividend is only my cost because they are in short term. तो वो लोग शॉर्ट टर्म का सोचते, तो दे आर थिंकिंग यार डिविडेंड इज ओनली माय कॉस्ट. और जो लॉन्ग टर्म का सोचता है वो सोचता है माय अर्निंग इज माय कॉस्ट, नॉट रिटेन अर्निंग. My total earning. Suppose my earning is 100 rupees and out of that I distributed 30, so I left with 70. And who will give dividend? That company normally gives dividend whose aim means, I'm not saying like this only, but normally if I want to expand business, so in that case I will need funds. And if I'm in need of funds, instead of borrowings, I will call my shareholder, yes, in this year I'm not going to pay you dividend, but listen to me, if I'm not going to give you dividend, but this will improve our earnings once again, because we are in the expansion mode. And if we are in the expansion mode, today I won't pay you, but tomorrow it might happen your share prices go up. So ultimately it is also your earning indirectly. One is direct earning, and indirect earning is that your share prices are going up. So if I distribute dividend, I do not have funds to expand my business, and expand करने के लिए funds नहीं होगा, then I have to borrow it from somewhere. तो इट्स बेटर ना, जब घर में ही पैसा तो काहे को रोना है आपको. जैसे आपको वो इसका ऐड आता था, जब घर में ही सोना तो काहे को रोना. तो वो क्या है, इट्स मुथूट फाइनेंस. तो आपके घर में ही पैसा है तो क्यों आप रो रहे हो भाई साहब. आपके घर में ही पैसा है 100 रुपीज, व्हाई यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. नाउ द रूल इज, सर हाउ मच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, नाउ वी डिसाइडेड, ठीक है, वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. सर आप क्यों बोल रहे हो रिटेन करो, नहीं चाहिए, नो रिटेंशन, आई डोंट वांट एनी रिटेंशन. So now our management has decided we will make sure we will give happiness to our shareholder. Yes, we will make them happy. So now what we are going to do, we are going to distribute our profits. Okay, I earned in the current year 100 rupees. So can I distribute 100? Yes, you can distribute full 100 rupees. It's your choice. It's a management choice. It's in general meeting you pass that, and you can declare dividend out of current year profits. But sir, in last year I earned 200 rupees, then can I declare dividend 150 rupees, but in current year I earned only 100 rupees. So 50 rupees I want to distribute. Can I use previous earnings? And then we have rules. When we are using previous earnings, then we have some rules. देखो, जो करंट ईयर में पाया, जो करंट ईयर में कमाया, उसमें से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो. करंट ईयर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. पर यदि आप ये 100 रुपया जो है इसका डिविडेंड ये तो दे दिया, पर इतने आप लोग ग्रीडी हो, डिविडेंड जो देना चाहते हो कि आपको पिछले साल का प्रॉफिट यूज करना है. अरे भाई साहब, पिछले साल का प्रॉफिट अब भी क्यों यूज करना है, इस साल थोड़ी कमाए हो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. फिर देना ही था तो पिछले साल ही देना था. यदि पिछले साल का प्रॉफिट भी यूज कर रहे हो तो फिर रूल है, और वो रूल क्या है वो सीख रहे हैं. किसके लिए रूल है बेटा, कैन यू टेल मी. रूल इज फॉर करंट ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और इफ यू आर यूजिंग फॉर लास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. लास्ट ईयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स 5 मार्क के लिए सीखना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट ओनली फॉर 5 मार्क्स. वेरी सिंपल. नाउ यू अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट. Yes, sir. Yes. So what you understood till now? Dividend, if we distribute from current year, it's not problem. But if we are going to distribute it from previous year profits, then we have to go to rules. Yes, beta. Very good. Read. Features, it can be declared only out of free reserves. Declaration of dividend Any implies... difficulty in understanding first feature? No, sir. हाँ. Declaration of dividend implies... ये कुछ तो मिसिंग है. Interim dividend. Yes, sir. Implies के बाद. Implies के बाद कुछ तो मिसिंग है. ते फीचर मध्ये सेकंड काहीतरी मिसिंग आहे. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इम्प्लाइज.
implies I think from current year profit होगा. You can check it in module also. Can you check it and tell me that feature? Other students, check it from StudyMat and tell me the second feature. And dividend includes interim dividend. Now, what is interim dividend, beta? Interim dividend is nothing but if you are paying dividend in between of the year. Okay, if you are paying dividend out of, not after AGM. Okay, you are declaring dividend after 6 months. So current year में इतना profit अच्छा हो गया, तो you are not distributed dividend after AGM. That is after 31st of March. In AGM you are not declared, but your board declared interim dividend in between. तो ये तो बढ़िया बात है ना. लोग पैसा लेने से थोड़ी डरने वाले. लोग बोलेंगे दो, दे रहे हो तो दे दो ना. तो डिविडेंड कोई ना बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए. कैन यू टेल मी कि शेयर होल्डर विल डिनाई आई डोंट वांट डिविडेंड? कोई डिक्लेयर करने के बाद कोई बोलेगा क्या? नहीं सर. नहीं, कोई नहीं. कौन बोलेगा मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए? एवरीवन इज बेटा बोलेगा ठीक है दे रहे हो तो दे दो. तो नॉर्मली इंटरिम डिविडेंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड, बट दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माय डियर राजकुमार, अभी एक ध्यान में रखना, इन लास्ट ईयर यू आर इन लॉस. ओके, तो आपका डेप्रिसिएशन जो था ना, डेप्रिसिएशन यू आर नॉट recorded in the last year, तो is not allowed. So dividend declare करने के पहले you have to provide depreciation. तो आप शेयर होल्डर को हैप्पी करने के चक्कर में you will have false profit without depreciation. तो without depreciation profit allowed है क्या? No sir. No. So first what you have to provide? Depreciation. And if you are not provided in the last year, तो provide that also and then declare dividend. Okay, now what is the rule? Now rule is very simple कि company can declare dividend out of accumulated profits. Accumulated profit means current year profit or last year profits? Last year profits. Last year profits. Only if current year profit is inadequate. Inadequate profit means current year में profit ही नहीं था sir. Oh ho. And then you declare dividend out of previous year profits. Why? Because sir, in this year we are in losses. In this year we are in losses. Okay. So implies means अभी एक सेंटेंस इज गिवन ना, वो आ गया. प्रियंका हैज रिटन दैट डिक्लेरेशन. बेटा प्रियंका, क्या स्पीड है टाइपिंग का? बेटा आपका कितना चैटिंग करते हो? इतने स्पीड में फास्ट कर दिया आपने. हाँ, वेरी गुड. तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड implies a formal decision taken by the board of directors to distribute the portion of profits to the shareholders. Once declared, it becomes a liability for the company and shareholders are entitled to receive the dividend as per record date. तो एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया ना, तो you cannot stop from distribution of it. Okay, तो कोई भी डिसीजन, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ये डिसीजन परमानेंट डिसीजन होगा. ओके, आया समझ में? तो बैकआउट नहीं होना है. ओके, तो डिविडेंड, अरे आई एम जस्ट जोकिंग बेटा, व्हाई आर यू टेकिंग इतना सीरियसली? ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. नाउ व्हाट इज द रूल? Dividend is declared rate must be less than average declared dividend rate in the last 3 years. तो बेटा क्या मीनिंग होगा? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? सर जो एवरेज डिक्लेयर डिविडेंड है उन लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकाल के जो हमने इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करना है उससे वो ज्यादा होना चाहिए. तो सी बेटा, 10%, 12% and 14%. This dividend you declared in the last 3 years. 10, 12, 14. So what is the expectation of the shareholder? इस साल तो 16% मिलेगा. But in this year, you have not earned profit. And therefore you are using the profit of the last year.
तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट इफ यू आर यूजिंग एंड इफ यू आर डिक्लेयरिंग 16% डिविडेंड, इट्स नॉट अलाउड because average rate of dividend is 12%, 10, 12, 14. तो what is the average rate? 12%. तो maximum कितना आप बोल सकते हो? 12% only. Got the concept? Yes, sir. And dividend is always paid on face value. तो ये declaration, if they are saying not 12% dividend rate, तो dividend rate is on which price? Face Face value value. price. If face value is 100 rupees, so you can declare only 12 rupees dividend for one share. One share को कितना maximum? 12 rupees. 12 rupees in my example. Now maximum amount that can be drawn from the accumulated profits and reserves. मतलब जो भी प्रॉफिट्स आप यूज कर रहे हो ना पिछले साल के, और उसमें से जो डिविडेंड दे रहे हो, तो मैक्सिमम कितना परसेंट दे सकते हो? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. तो यू कैन यूज योर अर्निंग्स मैक्सिमम कितना परसेंट? 10%. 10%. Why 10%? Because 90% we have to carry forward. Okay. So allowed is only 10%. 10%. Maximum. लिमिट रखना पड़ेगा ना, कुछ तो लिमिट रखना पड़ेगा. हाँ. And after withdrawal, amount in reserves must be greater than 15%. और ये तीनों में से whichever is lower, that dividend we are allowed to pay. All three conditions has to be satisfied. तो whichever is lower is allowed. Understood? अब ये कैसे? ये रूल है. After withdrawal in your resource balance must be. See, this is before withdrawal. कितना विड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 10%. और विड्रॉवल होने के बाद रिजोर्स में कितना बैलेंस चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल. जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे ना, यू वोंट गेट इट. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. सी, फर्स्ट रिकॉल दिस 3 रूल्स, राइट इट समवेयर, ऑल दिस 3 रूल्स, एंड देन सॉल्व वन इलस्ट्रेशन. कौन सा इलस्ट्रेशन है सर जी? तो इलस्ट्रेशन नंबर, रुको रुको, आई विल गिव यू नंबर. कौन सा चैप्टर आपका सबसे स्ट्रांग हो गया? कैश फ्लो. वाह, कैसे क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर अच्छा लगने वाले बहुत कम लोग हैं, और उसमें से आप एक आए हो जिनको कैश फ्लो का महत्व समझ में आया है. एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर 1 you have to solve from the study material, यूनिट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जाते जाते ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है. हैव यू नोटेड दिस रूल? Yes, sir. You can take help of the answer from study material if you want. तो ये पहले रूल को एक स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे शेयर कर दो. एक सेकंड, मैं जाता हूं यहां से. ओवर. एक सेकंड सर. आप ओवर ग्रुप सर. में हो? ग्रुप में हो या नहीं हो? हूँ सर, ग्रुप में शेयर कर देती हूँ. चलो, यस. एंड डू वन थिंग. उसके बाद you solve this illustration 1, and I am going to meet you at 8:35. 8:15 हुआ है, 20 मिनट आपको देता हो. 5-10 मिनट सॉल्विंग के लिए, 10-15 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक आपको. ओके? ओके सर. यस. अशोक जी, 20 मिनट दे दो इनको. अशोक जी, 20 मिनट दे दो. ये क्वेश्चन है, सामने रखना है तो रहने दो, फिर 20 मिनट के बाद देखता हूं. कर देना सबको.
रोहन जी, आंसर आया बेटा आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। हैव यू डन दिस बिफोर? नो सर। सर लॉ में पढ़ा था मगर भूल गया था, अभी फिर से पढ़ा। आपने एडवांस का कॉम्प्रिहेंड। क्लास किया था ना? नहीं सर, मगर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे देख के भी नहीं गए थे, केवल 3 ही देख के गए थे। ओ, कहाँ से हो आप? कोलकाता? नहीं सर, भिलाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? Yes, Rohanji, read the question. Due to inadequacy of profit during the year ended 31st March 20x2, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of the general reserve. From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from the general reserves. According to the company's declaration of dividend out of the reserve rule 2014, 17,009% preference shares of 100 each fully paid up 17,50,000, 8 Don't read lakh amounts. equity. General reserve, capital reserve, revaluation reserve, net profit for the ended 3 lakhs, and average rate of dividend last 3 years 12%. Now net profit. What is the meaning of net profit? This is before preference dividend and equity dividend. Got this? Yes sir. So सबसे पहले आपको इसमें से करना क्या है? You have to deduct preference dividend first. What do you have to deduct? Preference dividend. And preference dividend is 70,50,000 का कितना परसेंट? 9%. 9%. One lakh 57,500. So now profit available to equity shareholder कितना होगा? 3 lakh minus 1,57,500. 142,500. And equity dividend कितना है? 8 lakh 10% का of 80 lakh. 80 lakhs. तो you have to pay 8 lakhs. 8 lakhs dividend. तो लास्ट ईयर का कितना यूज करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना रिक्वायर्ड है? 6,57,500. वेरी गुड. अंडरस्टूड? Any difficulty in understanding this, beta? So first, what we have to deduct? Preference dividend. Preference So that is the dividend. profit available to equity shareholder. And then you declare dividend 80 lakhs, but 10% you want, no? 10% of 80 lakhs. Dividend is always on face value. So 8 lakhs का dividend देना है. And now for this, you will need past year का profit. So past year का profit, we have general reserve. And we have net profit. तो net profit तो zero हो जाएगा. तो अपने पास available past profit. Now what is first rule? Declared dividend rate. What is the declared dividend rate? 10%. 10%. And what is the average of 3 years? 12%. So first condition satisfied, correct? Yes sir. Maximum amount that can be withdrawn. So Less than 10%. % of paid up What is capital. paid up capital? Paid up capital is
97 lakh 50,000. 97,50,000. Whether general reserve is free? Yes. Yes, sir. Or capital reserve and revaluation reserve are not Included. free. So what is the free resource? 25 lakhs. 55 lakh. So 97 lakh 50,000 plus 25 lakh into 10%, 12 lakh 25,000. Correct है? I'll say yes or no. गलत हुआ सर क्या? मैंने इसमें P&L भी जोड़ दिया है. P&L में कहाँ बैलेंस है भाई साहब? बैलेंस ही नहीं ना, P&L में तो यूज होगा ना. अच्छा, पहले डिडक्ट हटा दिए थे, मैंने इसमें जोड़ के फिर लास्ट में उसको प्रेफरेंस के लिए हटाया, वैसे नहीं करना था ना. ना. ठीक है सर. अंडरस्टूड? यस सर. 12 लाख 25,000 और आपको चाहिए था कितना? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू वांट? 6 लाख 57,500. सो हो सकता है ना? यस. एंड Yes, आफ्टर sir. विड्रॉवल नाउ हाउ मच यू वांट टू विड्रॉ? 25 lakhs balance is there and you want to withdraw 657,500. So what is the balance? $1,840 to $500. And you have to check with 15% into 97 lakh 50,000. lakh 62,500. 62,500. It is greater? Yes, sir. Yes. So third condition is also satisfied. Okay. One Yes, more sir. time. One more time. Have you written everything? हाँ यस सर, बट आप जैसे पहले उसको डिडक्ट करे थे वैसे सब अलग हो गया मेरा प्रोसीजर. ठीक है, नो आंसर भी प्रॉब्लम. थोड़ा सा. ठीक है. So now one more time. Net profit. Now this net profit 3 lakhs is before preference dividend or after preference dividend? सर बिफोर. Before. तो पहले मुझे क्या डिडक्ट करना पड़ेगा? प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड. डिविडेंड. तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? यस, टेल मी कैलकुलेशन. सर प्रेफरेंस डिविडेंड 1,57,500. हाउ यू कैलकुलेटेड? सर 17 lakh 9% of 50,000 70. into 9%. Correct? Yes, sir. So what is the balance available? 142,500. Okay. Yes, sir. Yes, sir. डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है आपको? 10%. 80 lakhs पे 10% means dividend you want to declare 8 lakhs. 8 lakhs. करंट ईयर का कितना अवेलेबल होगा? करंट ईयर का 142,500 इज 42,500. अवेलेबल. तो लास्ट ईयर का कितना डिविडेंड यूज करना पड़ेगा? लास्ट ईयर का जनरल रिजर्व 6,57,500. 6,57,500. Okay. Now first rule. First rule is लास्ट 3 years का एवरेज डिविडेंड कितना था? 12%. And what is current year dividend rate? 10%. So within limit or not within limit? Within limit. Next, maximum amount that can be drawn from accumulated profits and reserves. So maximum profit, बोलिए. Maximum amount that can be withdrawn from accumulated profits.
What is the balance you want? 657,500, correct? Yes, sir. And you will calculate 10% of paid up capital. What is paid up capital? Sir, 97,50,000. Equity plus preference, both total. And in free reserves, which amount you will take? General reserve 25 lakh. 25 lakhs. Take a total and take 10% of this. What is the percentage of 10% of this amount? 12,25,000. And we want only? We want only? 6,57,000. You can check it on screen, no beta. 657,500. 6,57,500. Now, what is the amount of withdrawal after in reserves? How you will calculate? 25 lakh minus 6,57,500. Correct? फटाफट बोलिए ना रोहन. You are taking so much time here. जल्दी बोलो. 2,500 minus 657.5. What is the total? 18,42,500. And what is the 15% of paid up capital? 14,62,500. So this amount is greater or not? 9750 ka 15%. Greater. This amount is greater. So third condition is also satisfied. So you can pay 657,500 out of past profits. Understood? Yes, sir. Now how to present the answer? How to present the answer? ये नोटबुक में लिखना है बेटा आज. Is equal to average rate is equal to, yes beta, you can declare. देखो presentation, take a screenshot, share it on group. Those who are watching on recorded, pause कीजिए और you can write the answer. Sir, taken. Sir, taken. चलो. We have completed this. अभी क्या करेंगे आज? कैश फ्लो करते हैं क्वेश्चन. We have completed this. Can I take one cash flow statement का question? Yes, sir. So I will take some different question today. हाँ. टीवाई का नहीं लेता हूं मैं. थोड़ा पास्ट ईयर का लेता हूं मस्त एकदम. मैं 2023 में आया था. देखो एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए. लेट्स सॉल्व इट. एवरी वन ऑफ यू विल सॉल्व with me. Who wants to answer? Though it might be wrong, beta, I won't. I will help you out. Nirwan, please give chance to other students now. Okay, sir. चलो ठीक है. Mahalakshmi, yes beta. Now trading and P&L Yes, account sir. is not given. What is not given?
Trading account. Trading and P&L. So can you tell me which method? Indirect method. And see what is asked. Cash flow from only operating activities asked. तो एग्जाम में check it. Only operating activity is asked. But बेटा we will solve this question fully. हम लोग पूरा solve करेंगे. Okay? Though it is asked only operating, but exam में you can save your time by doing that. Don't solve other activities. Okay? चलो. First adjustment, one of the vehicle was sold. तो सबसे पहला काम क्या है? Vehicle is sold. तो vehicle को star mark. Accounts. A part of the total land was and capital reserve. तो capital reserve and land. ठीक है? Yes, sir. Depreciation on furniture. तो furniture को भी star mark लगा लेता हूँ. Interim dividend 5,000 paid. Okay. Provision for tax. वो तो account होता ही है. 8% debentures were redeemed at par after half year interest payment on 30th September. 8% debentures. Star mark. Part of the long-term investments are sold. Long-term investment star mark. Interest income received. इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड कुछ है क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल वगैरह कुछ भी नहीं. ओके. वेरी सिंपल क्वेश्चन. करना है ना? Yes, sir. सो बेटा व्हाट इज द प्रोफॉर्मा? OIF. विल डू इट इन 100% लिखना है क्या? ओनली अमाउंट्स विल राइट. Okay, sir. यू ओनली टेल मी यू वांट 100% आंसर ओनली अमाउंट्स. Sir. ओनली अमाउंट्स नो. Yes, sir. एंड इन हियर Return earning. फ्रॉम Accrued profit. Cash profit. करेक्ट. Yes, sir. This is what? Elimination round. Working capital changes. If current asset and current liability decrease, it's outflow. Current asset decrease and current liability increase, it is inflow. Say yes or no. Yes, sir. Goodwill. Goodwill Last is year asset. and current year. Goodwill adjustment is there or not? Goodwill adjustment is not there, sir. So can I call it as amortization? Yes, sir. How much? Sir. 28 and 15. How much? 13,000. What should I do of this? Sir, it is decreasing, so cash inflow. है गुडविल में थोड़ी होता है. एलिमिनेशन राउंड. Yes, sir. Sorry, sir. Depreciation. Add back. This is Yes, sir. non-cash expenditure. Are you paying Sorry, any sir. cash? No, sir. Sorry, sir. I can't get confused. लैंड अकाउंट. ठीक है. लैंड 6 lakh brought down 5,75,000. Second account, furniture and fixture. Debit plus credit minus 44,000, 48,000. Are you getting it? महालक्ष्मी Yes, sir. बोलिए.
Third one, vehicle. Yes, sir. Brought down 28,000 and 22,000. Office equipment, no depreciation. So can I write 21,000 directly as investing activity as there is no star mark? Yes, sir. Purchase, no? Yes, sir. 21,000 over. Long-term investment account. Investment account beginning 1,10,000 and 60,000. Where to write stock in hand? 88 का 96 हुआ. Sir, it is in working capital changes. Working capital changes 12,000 negative. Correct? Yes, sir. Bills receivable. Bills receivable is also working capital changes. 3650. Correct, no? Yes, sir. Negative. Yes, sir. Debtors. Decreasing. 6,000 inflow. Say yes or no? Yes, sir. What is the total of O plus I plus F? Difference between these two. $95, $350. Over Yes, sir. equity share capital 5 lakhs का 6,80,000. Finance. 1,80,000 inflow. You tell me that, no? 1,80,000 inflow, outflow. Okay, sir. General reserves. General return earnings, no? Both of this. Yes, sir. So 60 plus 52, 1,12,000. 90 plus 93, 1,83,000. Or you can write separately. You can take a difference between these two and add general reserve appropriation. And then you will get the same answer. How much? 183 minus 112. 93,700. 71,000. 71,000. How 23,700? Sorry, sir. 112 and 183. Correct? Yes, sir. Next. Next. Capital reserves. Capital reserve account. Yes, sir. Buy balance brought down. 0. 0. Two balance 75,000. get down 75,000. Sixth. Debentures 3 lakhs 0. Correct? Yes, sir. Loan from Andrew 15,000 ka 0. In finance, we have to. It is outflow, sir. Outflow. Very good. Liability reducing is outflow. Repayment. So 15,000 ka 0 is repayment. 13 ka 11. Bills payable. It is of work. We have to in 2,000 is out. 2,000 outflow. 45 ka 49. 4,000, sir. 4,000
Inflow. Inflow. Creditors for equipment. Creditors for Equipment. equipment. Okay. So creditors balance is Creditors balance is credit balance. so 7 number equipment account. What is the balance carried down and brought down? Brought down is 0 and carried down is 21,000, correct? Yes, sir. And out of that, 2 creditors, how much? So this is first time, beta. So on credit, 2 creditors, how much? Sir, what's the account? 10,500. Understood, and balancing is 2 cash. That we'll do later on. Understood how to write these creditors? This is first time. These creditors, you will write it in equipment account, 2 creditors. Yes, sir. In which account you will write? Land equipment account debit to creditors. Understood? Yes, sir. Outstanding expenses. Outstanding expenses, 3,000, 1,500. Where? Sir, outstanding expenses is Working capital changes. Why this so much time, beta? Sir. ठीक है, कोई बात नहीं. And income tax. Nominal account, so should I write by balance brought down or by payable? By payable. By payable and to payable. How much? Payable. 11,000 and 18,000. Understood basic posting? 11,000, 18,000. Over. 18,000. One of the vehicles sold for 3,000. One of the vehicle. To So cash. can I write? Huh? Sir, by cash. By cash. By cash. Cash comes in by cash. 3,000. And second effect. Now Second adjustment has effect. 2 effects. Investing activity by cash. Correct? Yes, sir. Next. A part of the total land sold for 1,25,000. Cost 1 lakh. Yes. Profit. So. First write by cash, no? Yes, sir. How much cash you are getting? 1,20,000. And to profit? 25,000. 25,000. Where to write 1,25,000 ka effect? Sir, in investment and also in Investing activity. And in elimination round, I will reduce 25,000. Very good, beta. I will reduce 25,000. Say yes or no? Yes, sir. Next. And capital reserve consists of revaluation. तो क्या करूं कैपिटल रिजर्व के क्रेडिट साइड में? कैन आई राइट बाय लैंड? Yes, sir. 75,000. And land के डेबिट में 2 capital reserve 75,000. Completed this account capital reserve? Yes, sir. Okay. Tally. Capital reserve completed. Easy? Yes, sir. Next. Depreciation. Furniture पे by depre? How much by depre? 5,000. 5,000. And vehicle पे by depre? 2,000. 2,200. 2,200. 2,200. Correct. Where is the second effect? In elimination round, sir. Add back. 7,200. Over. Yes, sir. Interim dividend paid 5,000.
Dividend is in finance, sir. It is a outflow. Outflow. Second effect? Second effect in elimination add back. Elimination route, add back 5,000. Provision for income tax. In income tax account, by P&L and 2 cash will be the balancing figure, correct? Yes, So sir. by P&L, how much? The provision for the tax 16,000. effect for 10,000. And where to give second effect? Add back in elimination. Elimination round, add back Add back. 16,000. Okay. 8% debentures were paid at after paying interest on payment, interest payment. So interest कितना आएगा? 3 lakhs into 4%. 12,000, correct? 1,000. Yes, sir. 12,000 here and add back here. Correct? Yes, sir. Means interest is of 6 months. And then this is very important, interest add back karna. Student may forget this. And debentures account, ये debentures है. To bank 3 lakh na. And in financing activity, Mahalakshmi, correct beta? Outflow 3 lakhs. Say yes or no? Yes, sir. Outflow So 3. in interest 12,000 and outflow 12,000. Okay. Next, part of the long-term investment sold at a profit of 8,000. By So, cash. no. To profit. To profit. 8,000. Elimination round 8,000. Buy cash we'll do later on. Okay? Yes, Line sir. by line. Investing activity का 21,000 कट कर दो. In investing activity, we open investment account, no, that equipment account. Yes, sir. So cut कर दो. Okay? Okay, sir. I forgot that. Very good, beta. Vishal, एक number, beta. Interest income received 6,500. So investing activity inflow. And elimination round, negative 6,500. Say yes or no? Yes, sir. Okay. Over. Yes, sir. A depreciation we provided. Depreciation we provided, no? Yes. Chalo, land. Land Now take land account. It is tallying or not? 25,000 something. 7 lakh. Yes, tallying. Yes, sir. Next. It is tallying or not? 40,000 plus 8,000. To bank 9,000. And this is additions. Therefore, negative 9,000. Purchase of furniture. Say yes or no? Yes, sir. 28,000. Yes, sir. Buy cash. By cash. Buy cash how much? 800. Okay. So we will assume sold at cost only. Buy cash 800. Cash. Understood? Okay, sir. Yes, sir. Buy cash 800.
58,000. Here, investment account. Sorry, sir. Investment account. And second, if you take investing activity, 58,000. Correct? 8,000. Debentures Yes, sir. over. Debenture. To cash. Yes, sir. Tallied. To cash 10,500. 10,500. Correct? Investing sir. activity outflow. Outflow. I forgot to take outflow. Income tax paid. Income tax 9,000. 9,000, no? Yes, sir. 9,000 income tax paid after operating cash profit. This amount will be there. Okay? Take a total. Elimination round 13 minus 25 plus 7.2 plus 5 plus 16 plus 12 minus 6.5. 21,700. Yes, sir. 2,000 plus. 17,550. So investing total, I am getting 8,550. Yes, sir. सॉरी है बेटा. अच्छा, सो लिसन नो. इंस्टीट्यूट ने जो व्हीकल है ना, व्हीकल वो सोल्ड नहीं लिखा है, इट इज बाय लॉस लिखा है, स्क्रैप किया ऐसे लिखा है. तो 800 we won't take it in the investing activity, but we have to add back here. Where we will add back? Elimination. Elimination. So 21,700 plus 800. How much beta? In elimination round we Add back. 21,900 ना? Yes, sir. नहीं, कितना था? 13 minus 25 plus 7.2 plus 5 plus 16 plus 12 minus 6.5 plus 0.8. Sir, vehicle account will be also changed now, so that is lost. Twenty-two 500. How much you are getting here? 1 minute. Vehicle account what? Sir, vehicle account is also changed because of loss. I have changed. No, by loss I have written over there. By loss. By loss. Sorry, sir, I don't know. 1 minute. 13,000. One more time. 13,000 minus 25,000 plus 7,200 plus 25,000 plus 7,200 plus 5,000 plus 16,000 plus 12,000 minus 6,500 plus 800. 22,500 plus 71,000. I'm getting 93,500 is the operating accrued profit. That is operating profit before working capital changes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Profit on sale of investment. Have I written 8,000? Sir. Okay. Yes, sir. 8,000. Yes, sir. 8,000 इधर आएगा. I have written it in, sorry. अभी बराबर है.
71,000, sorry, 13,000 plus minus 25,000 plus 7,200 plus 5,000 plus 16,000 plus 12,000 minus 6,500 plus 800 minus 8,000. 14,500 plus 71,000. How much? 85,500. Yes, I'm getting now same answer. 18,500 minus 12,000 minus 3,650 plus 6,000 minus 2,000 plus 4,000. And this is 11,500. 12,000 आया ना ये? What is 12,000 बेटा? Sir, What is 12,000? 12,000 is Stock in hand is 8,000. It is not 10,000. 96 and 88. oh yes sir, 8,000. No one corrected me, huh? 85,500 50 plus 6,000 minus 2,000 plus 4,000 plus 11,500. And this last amount is 1,500 or what? ये 1,500 है. $83,350 I'm getting. Yes sir. And minus 9,000 is income tax paid. 74,350. Yes. What is the answer? 74,350. What about investing activity? Investing activity 3,000. 12,000. Plus 58,000 minus 10,500. 1,73,000. Yes sir, 1,73,000. And what is financing activity? 1,00,000. Negative 152,500. 1,52,000, sorry. So 152 minus 173 plus 74.35. How much you are getting? 1,52,000 plus 74,350 plus 1,73,000. Sir, 3,99,000. I am getting the correct answer. 74,350 plus 1,73,000 minus 1,52,000. You are getting the final answer 95,350. Sorry sir, I added a finance. No problem. So now, yes, this problem completed. Only one point I made a mistake. Vehicle I consider by cash, but it should be by loss. Now, sir, how we can get this? See, one vehicle is sold is given in the question. So remaining is discarded. Remaining is discarded. What is the remaining amount? It is discarded, or you can say, call it as by loss on sale. We sold it for 3,000. So this is 800 is the amount. Okay. So that is by loss. And second one, I made mistake. Where I made mistake, I have taken the difference. See, this might happen that you have taken the wrong difference. I have taken here 12,000, but it should be 8,000. So two mistakes I made, and my cash flow statement won't tally in exam in that case. Okay. So now Asha ma'am will take over. तो आशा मैम बोलेंगे अभी. Good morning, students. Good morning, Sanket. Good morning, so students, how's your classes are going on? You can write it in chat section. How many topics you have completed? How many topics you have completed and how your studies are going? Good morning, Priyanka. Very good morning to all of you. Good morning, Soumya. Sanket, students are very active in our class, na? Yes. Very good. Good response. Okay, students, I want to share two things with you. First of all,
you all are requested to share your feedback for your classes. It will be very helpful for you and it is very helpful for us also, है ना? So for each classes you have to fill your feedback regarding these classes. The next is tomorrow is our BOS for success for May 2025 examination. So students, those who are appearing in the coming examination, they can join. Also, those who are not appearing, they can also join. In the morning, tomorrow there will be two sessions. One is related to accounts and one is related to law. The links for the same is also hosted on your website and I also share along with you through your mobile app or through your mail. And the next one, tomorrow is also we have a webinar for the case scenarios and your Sanket sir is taking these classes. Hana Sanket, have you shared this हाँ जी information to students? yes So yes ma'am. students, it will be very helpful. Either you are appearing for coming exam or for the next exam. I think it will be very helpful how to attend a case scenario based MCQs, what will be the procedure to solve. So I am requesting all of you and always try to join this webinar. The link for the webinar is also available in our website and we will try to cover more and more case scenarios. So you will be able to understand how to attempt a case scenario while doing in your examination because the case scenarios questions are new for all of you because it started from the May 2024 only. So by solving the case scenario along with your faculty, it will be helpful. And next, I have shared you two information. One is regarding the BS for success and next is regarding your webinar regarding the case scenarios. The timing for the case scenarios webinar will be 11 to 1:30. And for the BS for success, it will be from 11 to 1:30 and 2 to 3:30, 2 to 4. So I'm requesting all of you to join these webinars because it will be very helpful for all of you. Accordingly, your time, you can join these classes. And Sangeet, tomorrow we can Yes, ma'am. take the tests for all the topics which we have covered. Priyanka is asking, ma'am, some chapters allotted to another faculty, but ma'am, I requested please share all. Priyanka, we will always try to give you best from our faculties and different faculties have different views and different way of teaching, so it will be very helpful for you to understand different types of the because now the accounting standards is the provision based and the interpretation and the way of teaching will be different, so try to grasp all the and we always try ki we collect our faculty is the best faculty for you. Ma'am, please provide head of the okay, we will take the queries. Good morning to all of you and uh, Abhilasha is saying accounts classes are going really very nice, very good. Okay. Abhisha is saying we have completed 3 chapters. Sanket, you can ask any question from any student so we can take the test. Okay How to ma'am, fill the feedback form. How to fill the feedback form, we will share you. we'll ask them format of balance sheet. Okay ma'am, any one of them you can ask. Yes, raise your hand, those who want to tell me the pro forma of balance sheet. Ma'am, you can ask any student balance sheet pro forma. Okay. Bhumika, you can unmute. Bhumika is raising hand. Bhumika. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, Bhumika. How's your studies going on? They are good, ma'am. Very good. Yes. Yes, Can I start Bhumika. the program? Yes. Yes, balance sheet, equity and liabilities. First one is shareholders fund, share capital, reserves and surplus, and share money pending. Share money against share warrants. Money held against share warrants. Second one is the application money pending allotment. Third one is non-current liabilities. It covers 4 heads: long-term borrowings,
long-term provisions, other Deferred tax long-term liability. Deferred tax deferred liability you forgot. deferred tax liabilities, long-term provisions, and other long-term liabilities. Next one Don't is change the sequence, Bhumika. First okay. other long-term liabilities and then long-term provisions. Okay. In the Schedule 3 format, the sequence will always remain the same. Okay, ma'am. Yeah. So current liabilities, short-term borrowings, trade payables, and other current liabilities and short-term provisions. Next, assets. Non-current assets. First one is property, plant, and equipment. Second, intangible assets, and intangible assets under development. Work Capital and WIP you forgot. okay, sir. Work and Non-current investment. non-current investments and other non-current assets. Next, Deferred tax current asset, long-term loans and advances you forgot. Bhumika. assets. Bhumika, nahi, वैसे nice attempt, but as you missed some of the items, so please revise it again. Okay? Okay, ma'am. Very good. But we are seeing keep loads of the students giving the answer, raising their hands. It's very good to you and good for us also. And the students who are asking how to fill the feedback form, the feedback forms are available our BIOS knowledge portal, and it is also available in your mobile app, from which you can fill the feedback form. Okay. Okay, Astha is asking, ma'am, where to get the link. The link is provided in the BIOS website. When you open the website, it will be the pop-up on your website. And also, we have also shared the messages to you and mail to you. They are also on WhatsApp, ma'am. If they have any query, they can. We have also WhatsApp group. So we will also try to share it from here. Today we will share the link. Okay. Okay. So, anyone who wants to answer buyback entries, Rajveer? Can you explain us buyback entries? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Rajveer. Good morning, How's ma'am. the preparation going on? Nice, ma'am. Very good. So Rajveer is our foundation student, ma'am. He cleared his foundation by attending our BOS lectures only. Very good. Lots of students call us and mail us regarding the classes, and they have cleared their foundation by watching these classes and learning through the our faculties. So congratulations all who have cleared, and all the best to all of you. So Rajveer, answer the queries. Yes. First entry, equity share capital account debit, premium payable on buyback account debit to equity share buyback account. Second entry, equity share buyback account debit to bank account. Then we'll cancel the premium. So premium P&L account debit to premium on payable on buyback account. Then we will create CRR so of the face value of shares buyback. Okay, So how much CRR you will create, Rajiv? face value of the shares that are bought back. If company have issued some equity shares, then how you will calculate the CRR? Then always remember, when company is issuing the fresh issue for the buyback, it should be deducted while calculating the CRR. Many students ask queries regarding the ma'am, as we have backing the 5 lakh, but you are creating the CRR 3 lakh. Why? It is because the company is already issued the fresh issue of equity share. After deducting the fresh issue of equity share, we will create the CRR for the balance. Ma'am, preference shares. That's why you got confused. For buyback equity shares, we issue preference shares, and for redemption of preference shares, we issue equity shares. We cannot have same shares. We cannot have the same for which we are buybacking, na? Okay. Yes. So yes, Rajveer, preference share, we solved that question. No? So out of 500, 200 is already issued for the buyback for preference shares. So we issued preference shares. Remember, no? Yes. That last question, out of 500, 200 rupees issued for the 2 months back, they issued preference shares. Yes, sir. 300 rupees, we created a CRR. Remember? Yes, sir. Yes. Okay.
And Rajveer, you answered that premium payable is cancelled with P&L. So first you will use P&L or security premium? Security premium, then P&L. So you answered Why you are P&L. using securities premium first, Rajvi? So it is in provisions. Who will explain why we are using securities premium first? Who will explain? Sanket, you Yes. may unmute any student. Yes, Rohan. Ma'am, because as per the Companies Act 2013, it is one of the uses of the securities premium account to write off the premium on buyback. Okay, but you can also write off from the P&L, na? Then why you are using securities premium? Ma'am, Because because it's it not is specifically mentioned, and when we are not having that thing, then when we can use the general reserve, free reserves. okay. Any other add on something? Priyanka? Priyanka? Yes, sir. Yes, मैम गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम, ये इक्विटी शेयर्स पे हमें एक्स्ट्रा अमाउंट हम दे रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स पे, तो इसलिए हम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे, देन हम फ्री रिजर्व पे जाएंगे. नहीं प्रियंका, वही हम पूछ रहे हैं कि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले क्यों यूज किया? क्योंकि मैम ये स्पेसिफिक फॉर इक्विटी शेयर्स के लिए है. बिकॉज इट्स नॉट अ फ्री रिजर्व ना, आप एक रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप हमेशा क्या करोगे, जिस रिजर्व की रेस्ट्रिक्शन है कि मेरे पास पता है लिमिटेड है, व्हेन वी हैव लिमिटेड कि हम इट कैन यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, देन वी विल ट्राई टू कवर इट फ्रॉम द दैट स्पेसिफिक पर्पस ओनली, बिकॉज इट इज नॉट अ ओके. Yes, ma'am, it's a specific. हाँ, many students give Then answer for to go that for of general reserve. very good. पहले Yes. हम लोग वही यूज करेंगे ना रिजर्व, प्रियंका? यस सर, पहले मैम ने स्पेसिफिक जैसे यूज करेंगे पहले सिक्योरिटीज तो यही मैम पूछ रहे थे, ये ऑलरेडी क्लास में हमने डिस्कस किया था. ओके. और सीआरआर का यूज क्या होता है प्रियंका? सीआरआर का यूज सर इसका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, इसको हम बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज करते हैं. वो एंट्रीज हमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है, बोनस शेयर्स की. सर वो एंट्रीज अभी कर ली है, उसमें स्क्रीनशॉट्स में आपने दिया है. क्या एंट्री होती है फिर बताइए? बताओ. सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर हम उससे प्रॉफिट यूटिलाइज करेंगे, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इससे क्या होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमारा कम हो जाएगा और इक्विटी शेयर्स जो हमने बोनस इशू किया है वो हमारा बढ़ जाएगा. वेरी गुड बेटा, विदाउट माय हेल्प We आपने have एंट्री to बताई. maintain our capital intact. Very good. Very मैम good. स्क्रीनशॉट में सर ने शेयर किया था. Very good. लेकिन साथ साथ all students are watching this classes ना, और carefully, तो ये very good thing है. Very good. Okay. Many students give answer through chat box. All are very giving the correct answer. Very good. मैम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए हमें ना पूरा समझ आ रहा था एक फ्लो में. तो Very कुछ good. लेक्चर तो प्रियंका आपको फीडबैक भी जरूर फिल करने हैं. ओके मैम फिल कर देती हूँ मैं. हाँ, डेली क्लासेस में आपको करना है, बिकॉज हमें पूरा डाटा मेंटेन करना होता है हमें फैकल्टीज का, तो आप हर क्लास का फीडबैक जरूर फीड करने का है ना. ओके मैम. वेरी Okay. गुड. If you have any queries, beta, otherwise we will wind up the session. Yes, raise your hand if you have any query. जो मैम के साथ बात करना चाहता है, कुछ भी रहेगा, या मेरे साथ टुडे सेशन. एनी टाइप ऑफ क्वेरी. हाँ, रोहन इज रेजिंग हैंड. रोहन. यस रोहन. आजकल क्वेरीज बहुत कम आ रही है मैम, उनको डाउट्स नहीं आते अभी, सब समझ में आ रहा है उनको, लगता है. सर मेरे को आपसे डाउट था एक ठोक. हाँ सर जो ई शॉप का आपने जो एंट्री बताया था उसमें एज पर मॉडर्न अप्रोच एंड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच इक्विटी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड इक्विटी वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से हेड में जाने चाहिए? कौन से? एज पर मॉडर्न अप्रोच एंड एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच.
क्योंकि अच्छा, मेरे को एंट्री समझने में दिक्कत हो रही थी। ईसॉप का आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, जो लोगों को हमें ये शेयर एम्प्लॉयज को शेयर्स देने, तो एनी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट हो गया, एंड मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, तो वो कैपिटल का पार्ट हो जाता है ईसॉप, समझा? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज इट अ लाइबिलिटी अकाउंट? नहीं, लाइबिलिटी इसलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज इट कैन गेट रिवर्स इनटू रिजर्व्स इफ दे हैव नॉट ऑप्टेड। तो हम लोगों को एक एमसीक्यू भी आपने देखा होगा, वेयर टू शो ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, वी आर शोइंग इट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझ में आया? Sir, can we say that ESOP outstanding account is like a provision? प्रोविजन बोल सकते हो, बट प्रोविजन बोला तो हेड बदल जाता है, तो वी विल कॉल इट एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही बोलेंगे, या रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। नहीं, because every year we are creating that, no? Accumulating. Something 2020. Generally provision for, we create provision for our expenses ना, हाँ, तो हर yes, हेड का we have given the different name, so try to grasp that name only, ठीक है? तो वी आर क्रिएटिंग एक्सपेंसेस फॉर दिस, नो डाउट कि एक्सपेंसिव डेबिट होता है, बट वी आर But नॉट श्योर ना कि ये पैसा हमें देना ही है या नहीं देना है। इफ इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट ऑप्टेड, एम्प्लॉइज आर नॉट ऑप्टिंग दैट ऑप्शन, देन दे माइट गेट कन्वर्टेड इनटू जनरल रिजर्व, करेक्ट है? तो वो ऑप्शन yes. लेंगे, जैसे प्रोविजन होती है, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर वारंटी, तो मुझे पता है कि ये प्रोविजन मैं क्यों क्रिएट करता हूं, क्योंकि मुझे ये पैसा देने की लाइबिलिटी आने ही वाली है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और वी आर नॉट श्योर अबाउट अवर एम्प्लॉइज एंड अवर मार्केट प्राइस, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये ऑप्शन कन्वर्ट हो सकता है रिजर्व्स में, इसलिए वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट रखते हैं। गॉट द कॉन्सेप्ट? तो प्रोविजन का हेड अलग है और ईसॉप आउटस्टैंडिंग का हेड अलग है। Okay, sir. Employee welfare expenses? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस बोलना है क्या हाँ, आपको? compensation तो expenses. वो तो आपका P&L में ही जाएगा, वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर। Sir, every year that we were creating employee compensation expenses to employee Yes. outstanding, and then after that it is written off by transferring it to the P&L. नो, जनरल रीजन आई Employee टोल्ड यू दैट compensation. ईपीएस में गेट अफेक्टेड ड्यू टू दैट, तो ईपीएस नहीं अफेक्ट होना चाहिए, इसलिए वो डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू ईसो आउटस्टैंडिंग टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो P&L में लाएंगे ही नहीं वो चीज। नहीं, ESOP compensation expense को हाँ, वो जाएगा write off P&L में करने, बिकॉज ऑफ write off एक्रूअल, करने के लिए। हाँ, प्रूडेंस हाँ, okay, कॉन्सेप्ट sir. हिसाब से। ओके, Okay, sir. तो Okay, वो sir. हम लोग P&L में डालते हैं, बट आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में बताते हैं, और एंड में हम लोग उसको वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, जितना वो नहीं लिया शेयर्स उसके नहीं लिया रिस्पेक्ट में। वो, और जिन्होंने ले लिया तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके सर, कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में। यस सर। ओके, यस, क्लियर ना अभी? हाँ, यस सर। यस, जयेंद्र बेटा, डू हैव एनी क्वेरी? We cannot issue same kind of other specified securities. कौन सी होंगी वो सिक्योरिटीज, मतलब इक्विटी शेयर के लिए? इक्विटी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर्स ही नहीं इशू कर सकते ना। आप बायबैक भी इक्विटी शेयर्स कर रहे हो और वही इक्विटी शेयर्स आप लोग इशू कर रहे हो, तो इट्स नॉट अलाउड फॉर 6 मंथ्स। मतलब और कोई स्पेसिफाइड नहीं है उसके हिसाब से? नहीं, डिवेंचर्स तो लाइबिलिटी होती है, तो वो आपका नहीं आएगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग इशू कर सकते हो। ओके, ठीक। ओके, नेक्स्ट सौम्या। सौम्या, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, in shares outstanding test, we need to take only 25% of equity shares, sir. नो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल्सो, पेड अप कैपिटल। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, paid up capital includes preference share capital also. Okay, in Ind AS you have a different treatment, but abhi we have to understand from accounting standard point of view only. Preference shares we consider it as a part of equity share, share capital only. Okay, Soumya. संकेत, we Okay can na take beta? last query only, है Last, ना? yes. हाँ, बानी। बनीप्रीत कौर। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाउट है। बोलिए ना। सर टेस्ट योर नॉलेज में 13th क्वेश्चन है, वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1,80,000 इज 10,40,000,
तो इसका मतलब यही तो नेट प्रॉफिट पे डेप्रिसिएशन ऐड है, तो नेट प्रॉफिट निकालना है तो डेप माइनस करके लिखेंगे। अरे ऐसा कैसे होगा? नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन कभी ऐड होता है क्या? यू सब ओनली पी टेल एंड मी। एल में वहां पे आता है, तो वहां पे बैलेंस आ नेट जाता है प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन नेट माइनस प्रॉफिट करके। के डेप्रिसिएशन की वजह से नीचे जाएगा क्या ऊपर जाएगा बनीप्रीत जी? नीचे। तो नेट प्रॉफिट रिड्यूसेस, डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस योर नेट प्रॉफिट, नो? यस सर। तो फिर आप ऐड कैसे करोगे? सॉरी, ऐड कैसे होता है प्रॉफिट? वो तो नेट प्रॉफिट लेस होगा, इसलिए हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए ऐड बैक करेंगे ना बेटा। यस सर। समझा ना आपको? आप नेट यस सर। प्रॉफिट को ऐड बैक ही करोगे, लेस कैसे करोगे? नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स मतलब व्हाट? इंक्लूड डेप्रिसिएशन मींस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी एंटर्ड, इट डजंट मींस कि डेप्रिसिएशन की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। नेट प्रॉफिट कभी बढ़ता है क्या बेटा डेप्रिसिएशन की वजह से? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, वो प्रॉफिट को घटाएगा। आप ओके इंक्लूड सर। वर्ड के वजह से कैसे कंफ्यूज हो गए? इंक्लूड मींस नॉट एडेड नेट प्रॉफिट, इंक्लूड मींस इट इज कंसिडर्ड इन द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में लॉस ही कंसिडर करते हैं ना डेप्रिसिएशन। आप ओके वर्ड सर। टू वर्ड मत जाइए, इंक्लूड्स मतलब एडिशन करना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स मींस व्हाट? डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। ओके अंडरस्टूड? सर। यस। यस सर। चलो, यस मैम। Yes, Sanket, now we can wind up the class. यस यस यस, Okay. ठीक, विल वाइंड अप। अशोक जी बंद कर दीजिए। अशोक जी सेशन बंद कर दीजिए। यस यस, थैंक यू थैंक यू। यस। Recording stopped.